Guys, this is Stock JM Financial, and I'm assuming that all of us are not aware about what is this company. So let us discuss the business model. ओके तो एक बार बिजनेस मॉडल समझते हैं जेएम फाइनेंशियल का क्या है एंड देन वील गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट इज दिस सो आई एम यूजिंग द लेटेस्ट पीपीटी दैट द कंपनी हैज अपलोडेड इफ यू कैन सी दिस इज मे 29th May so just a month back or so this is their Q4 the latest quarter's presentation that they have come up with and let us discuss what is happening in this business. Okay, so as you can see, there are guys few. So JM Financial is not a one business company. It is a company having multiple businesses. So we'll have to understand the business model, as the first thing to get into any kind of discussion. Okay. So let's say there's corporate advisory in capital markets. They have private markets. They have wealth management. They have affordable loans. So let me just try making this a bit simpler. Okay. In case you guys have any queries, you can feel free to ask. Let us make it a bit simpler. So JM Financial is a company. Okay. The company started somewhere in 1973. The company started in 1973 in Mumbai, and right now, currently, if you see as per their presentations, the company has few businesses. The first one, let's say, is the capital advisory in capital markets. Let's not get into terminologies. I'll explain you what this business is actually doing. So capital advisory mein na guys, JM Financial is India's one of the leading IPO, companies. Okay, they are leading investment bankers to be honest. If you see a list of big companies, ka IPO is being helped by JM Financial. So they help companies in raising funds and they are very good at doing this. And if you'll see, बहुत बड़े transactions are executed by JM Financial because they are in touch with a lot of big companies, big entities, and they have been doing this since a lot of years now. They are not a new company, right? So that is their first and the foremost thing, investment banking. So ये उनका एक division है investment banking. You guys understand what's investment banking, right? They help companies, raise funds through IPO. IPO होता है. Now they also help in mergers and acquisitions. They also help companies in let's say they want to raise funds through other ways. They want to do it through private equity. Okay. So private equity funding bhi hota hai. Sorry, private placement is a better term for you. So if let's say company doesn't want to raise money through public, private placement karna hai, they'll help in those things as well. So proper investment banking firm, okay, is their first division, capital advisory. And if you ask me, once I studied all the businesses, this is the crown jewel. Okay, ये उनका सबसे best and cream business according to me because they're champions at this. If you take a survey, you ask people in this domain as well, JM Financial is in the top 3, 4 investment banking firms in India today. Okay, biggest IPO transactions have been managed by them. So that is there. Second business is there. Let's say asset management, or rather, let me say first wealth management. They're also into wealth management. Now, wealth management क्या होता है? And I don't want to mix it with asset management because they are also into asset management. So एकदम simple words में wealth management is they are managing money of people who are high net worth individuals, who are ultra high net worth individuals, okay, etc. Now, within wealth management, it is not just portfolio management service. So they are providing PMS, but they are also at the same time distributing mutual funds, okay, distributing mutual funds, etc. So they are doing a lot of these things. वेल्थ मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, प्रोवाइडिंग अ सॉफ्टवेयर टू इंडिविजुअल एमएफडीज एक्सेट्रा. So a lot of these things into wealth management is what they're doing. Apart from that, they're also into asset management. Asset management क्या होता है? So mostly people tend to get confused between asset and wealth management. Asset management मतलब आप product बनाते हो, you make the product itself. So for example, India में I guess 48, 49 AMCs है, asset management companies. Asset management companies मतलब if you are an AMC, आप खुद का mutual fund, hedge fund launch कर सकते हो. Yes. So now JM Financial
recently has started with asset management in the last few years. This wasn't their legacy business. Asset management में क्या करते हैं? They launch their own mutual funds. They can launch their own AIFs, etc. So asset management में they are launching their own mutual funds, whether it is equity mutual fund or debt mutual fund, and this is very new, and they have done it together with someone. So 100% own नहीं कर रहा JM Financial ये कंपनी का asset management division का. Then we'll get into their another business which is into home loans, which is also new but doing extremely well. The home loan business, once I started understanding very well. So what they have done is earlier they used to give loans to big ticket loans. Now they have started consciously getting into small ticket loans. छोटे छोटे लोगों को salaried है, self-employed है, home loans दे रहे हैं. Now home loans is a very safe type of loan, ठीक है, and it is doing very well. They're growing extremely well. Okay, so home loan business, you guys understand what is home loan, right? So home loan business उनका बहुत अच्छा चल रहा है. Okay, and they are giving to salaried and self-employed individuals. Okay, इनको ही दे रहे. They are not doing any other kind of loans. Salaried self-employed loans majorly they are giving. Okay, salaried and self-employed लोगों को दे रहे. Moving to the next, आई गेस होम लोन हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, असेट मैनेजमेंट हो गया, एंड नाउ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, प्राइवेट मार्केट्स. प्राइवेट मार्केट्स में क्या कर रहा है? ओके, कंपनीज दैट डोंट वांट टू गो थ्रू द आईपीओ रूट. ओके, आईपीओ वगैरह में नहीं जाना. प्राइवेट मार्केट्स क्या होता है? दे गिव let's say guys, imagine Gaurav, recently the markets in the last 5-6 years, a lot of people have participated in the markets. बराबर है. तो बहुत सारे कंपनीज जिसका मार्केट कैप 1,000 करोड़ था, they have reached suddenly 30-40 thousand crore market cap. Majority shares तो promoter के पास होता है. The owner has majority of shares, right? So imagine his net worth might have exploded. Okay, people say that I had bought a stock at 10 rupees, now it has become 100 rupees, 10x हो गया, and I had 1 lakh, तो मेरा तो 10 lakh. Imagine people who had hundreds of crores, okay, and वो 100x, 1000x हो गया. So promoters का net worth in India recently have exploded because of the boom in the markets. अभी आप समझो प्राइवेट मार्केट्स में क्या होता है. लेट्स से I my net worth, individual net worth is let's say 1,000 crores, बट उसमें से 900 या 950 crores इज इन माई कंपनी शेयर्स ओनली. तो अगर मुझे पैसे का जरूरत, लेट्स से आई वांट टू डू सम फंक्शन और आई वांट टू डू समथिंग, बाय अ न्यू हाउस, दिल्ली में अभी कमेला वगैरह में हाउस घर कितने महंगे. सो पैसा चाहिए, क्या कर सकते हो? यू कैन टेक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, खुद के शेयर्स प्लेज करके. यू डोंट वांट टू सेल योर शेयर्स बिकॉज इफ यू सेल योर कंपनी शेयर्स यू विल लूज कंट्रोल. सो यू जस्ट बोरो मनी अगेंस्ट योर शेयर्स. ओके, सो ये सब होता है. यू कैन टेक लोन अगेंस्ट योर सिक्योरिटीज, यू कैन प्लेज योर शेयर्स, प्रमोटर्स कैन डू दैट. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज bespoke क्रेडिट ऑल्सो. bespoke क्रेडिट मतलब आपको लोन चाहिए बट नॉट एट द बैंक्स टर्म्स, एट योर टर्म्स. मुझे ऐसा टाइप का लोन चाहिए. Let's in the first 2 years I only pay interest, थर्ड ईयर से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या एक टिपिकल टाइप ऑफ लोन. सो यू इट इज लाइक एन ओटीसी, ओवर द काउंटर अरेंजमेंट. So these JM Financial also providing bespoke credit, etc. Also there is distressed loans. Okay, जैसे let's say what happens is, let's say there is a normal bank, let's say Bank of Baroda gave a loan to a company and the company is not able to repay. Now Bank of Baroda is afraid that abhi NPAs will increase, things will happen. So Bank of Baroda usko बेच देता है. Bank of Baroda will sell the bad loan to company like JM Financial. So in typical terms, okay, it is like an ARC business, asset reconstruction business. Bank of Baroda gave loan to a company, that company is not repaying, they are defaulting. Bank of Baroda doesn't want its balance sheet to look bad. So ये जो bad loan है, they will sell it to JM Financial, and that JM Financial will then try recovering money. JM Financial discount पे खरीदेगा, they will try recovering, and that is what they do. So distressed credit भी है इनका part इसमें. Now Gaurav behind the chat box said, sir, but they were also into ARC business, ARC segment. Private market is ARC only. This. Now I'll tell you, this is the broad business model of JM Financial. If you see, there are 5 pillars to this.
currently in their presentation they are showing they have four pillars. They have combined the wealth and the asset management, but in my opinion, समझने के लिए these are two different things. Why am I distinguishing both of them? Because देखो wealth management ना, उसके मेट्रिक्स अलग होते हैं, असेट मैनेजमेंट के मेट्रिक्स अलग होते हैं, एंड करेंटली असेट मैनेजमेंट इज वेरी न्यू सेगमेंट फॉर देम, सो दे आर मेकिंग लॉसेस इन असेट मैनेजमेंट. एट द सेम टाइम वेल्थ मैनेजमेंट का 100% ओनरशिप जेएम के पास है, असेट मैनेजमेंट दे पार्टनरिंग विद समवन, सो स्टेक भी अलग है. एक में लॉस एक में प्रॉफिट है, सो आई थॉट लेट्स नॉट कंबाइन इट, लेट्स कीप इट सेपरेट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस. ठीक है, तो ये पांच चीजें हैं जेएम फाइनेंशियल में. किसी को कोई क्वेरी है तो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, एंड I'll tell you what has happened in the past at the same time. So let us discuss in more details. What I'm saying is business model समझ गया. किसी को कोई query they can put in the chat box. Simultaneously, I'll give you some background about what the company has done in the past. Okay. अभी GM Financial ना, um, if you will see in the last 6-7 years before 2024, ठीक है, so 2024 को हम मिड पॉइंट रखते हैं. ओके, बिफोर 2024 this phase, and after 2024, in 2024 they announced a pivot. एक pivot management ने उनके कॉन कॉल में अनाउंस किया that we are going to shift. इसके पहले क्या करते थे, देयर एआरसी बिजनेस वाज अ वेरी ह्यूज बिजनेस. एआरसी बिजनेस में प्रॉब्लम क्या था, द बैलेंस शीट बिकम वेरी हैवी. सो व्हाट दे डू इज लाइक बिफोर 2024 व्हाट दे यूज्ड टू डू इज के, जैसे मैंने बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा लेट्स और एनी अदर बैंक वुड हैव गिवन लोन टू अ बिग कंपनी, द कंपनी नॉट एबल टू रीपे, तो जेएम फाइनेंशियल खुद के पॉकेट से लेट्स से दे पेड 5,000 करोड़ और वो पूरा कंपनी खरीद लिया. And खरीद लिया ऐसे, and then they will restructure it and then you know try recovering. तो मतलब वो रिकवर करेंगे, ट्राई कर रहे हैं. So a lot of money of JM Financial was stuck in such companies. पैसा अटक जाता था. So in 2024 they announced कि we will reduce this. Now overnight तो नहीं होगा. So they said it'll take us couple of years. But in 2024 they announced कि bro, enough is enough. We don't want to continue this ARC business. So now what they are doing is they are not getting into new ARC business. अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलर थिंग में खुद का पैसा बहुत कम लगाएंगे. लेट्स से दे वांट टू बाय अ डिस्ट्रेस्ड कंपनी, 100 रुपए का डिस्ट्रेस्ड कंपनी है. पहले दे यूज्ड टू पुट पूरा 100 रुपीज फ्रॉम देयर ओन पॉकेट. नाउ दे विल बी लाइक वी विल गिव ओनली 50, बाकी का 85 दे विल अरेंज फ्रॉम अदर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट. ठीक है, एंड दे विल कंबाइन एंड डू, तो उनका पैसा कम अटक रहा है, एंड दे जस्ट अर्न मैनेजमेंट फीस ऑन अरेंजिंग दिस मनी. सो यू अंडरस्टूड इट, द सेम ट्रांजैक्शन बिकम्स मोर लुक्रेटिव नाउ. सो दैट इज व्हाट दे अनाउंस कि 2024 से दे आर चेंजिंग द वे दे आर डूइंग बिजनेस. स्पेशली एआरसी बिजनेस को कम कर रहे हैं अभी, उसका लोन बुक कम कर रहे हैं. आई गेस आइडिया आया सबको. ठीक है, मैं क्या सोच रहा था, लेट अस डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टुडे. Okay, I am interested in JM Financial at current valuations. Started buying some tracking position. Guys, again, for educational purpose, please don't start buying the shares without thinking, without doing your own research. So I started buying some position. I have not yet bought the full position that I want to buy in JM. But I feel the current valuation is very attractive. Now, Jainam is saying, sir, growth guidance 15% and P ratio 10 से कम है. Guys, do we value uh, capital market stocks at P? Parth is saying revenue hasn't been increasing. Parth, what is happening now? Private markets का जो business है, they are purposely not doing more transactions over there. So you cannot see the overall JM Financial का revenue बढ़ रहा है कि नहीं. Private market, so you have to do a segment-wise discussion only. So can anyone tell me if we want to do a valuation of this company today itself, right now, how can we do the valuation? Correct price the book, Price to book is a PV good ratio. metric, yes. But what else? Should we take a PB of the whole company? Which is not wrong. जैनम भाई ने सही बोला, सम ऑफ द पार्ट्स करना. किसी ने सुना एसओटीपी क्या होता है? सम ऑफ द पार्ट्स अप्रोच यूज करके करना है अभी का भी वैल्यूएशन. शुड वी डू अ बैक ऑफ द एनवलप वैल्यूएशन अभी का भी? व्हाट्सएप, चलो.
चलो Yes. we do the valuation. देखिए उनका पीपीटी है ना, पीपीटी will give us very much good data. देखो this is the slide that is super important for us. This is the this is a very nice very important slide for us. As I said, see यहाँ पे ना उन्होंने clearly businesses दे दिया. Okay. Corporate advisory, as I said, वो investment banking division. Second, private market. Third, wealth management. Fourth, asset management. Fifth, home loans. So there are five businesses that the company is into. हम क्या करते हैं ना, we will do individual valuation of these five businesses. Assuming कि ये पांच अलग कंपनी है, we'll do valuations and then do sum of the parts and see whether the current valuation is attractive or not. क्या बोलते हो? Try करना. Should we do it? Sum of the parts valuation करते हो. इसको एसओटीपी बोलते हैं. और टाइप ऑफ वैल्यूएशन मेथड दैट वी यूज फॉर कंपनीज हैविंग डिफरेंट बिजनेसेस, जैसे रिलायंस है, आईटीसी है, यस सच कंपनी में वी शुड डू एसओटीपी वैल्यूएशन. ठीक है. सो व्हाट हैव डन इज रीसेंट पीपीटी पढ़ा है, कॉन कॉल पढ़ा है. ओके. एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डू दिस एंड वील डिस्कस एंड डू इट टुगेदर ओनली. आई डोंट वांट टू डू इट इंडिविजुअली. सो विल यू गाइस हेल्प मी? साथ में करना. Yes, sir. ठीक है. Can someone please open screener? Or do you want me to open screener? Can someone tell me what is the market cap? तो आज का मार्केट कैप कितना? मार्केट कैप आज का डेट क्या? 5 जुलाई. 12504. साढ़े 12,000 ना, मतलब 12,500 करोड़ मार्केट कैप. ठीक है. ये अपना आज का वैल्यूएशन है. लेट्स सी द सम ऑफ द पार्ट्स. इफ द सम ऑफ द पार्ट्स व्हाट वी आर गेटिंग इज लेस देन मार्केट कैप, so it means the company is overvalued. If it is higher, then the company is undervalued. ठीक है. तो ट्राई करते हैं. चलो. ठीक है. पहला कौन सा लेना है? फर्स्ट बिजनेस. फर्स्ट बिजनेस Capital market. Home कौन सा loans. लेना है गाइस? पहला बिजनेस लेट्स से Capital market. कैपिटल मार्केट वाला लेना. कौन सा लेना? लेट्स से वी विल टेक जेएम फाइनेंशियल में होम लोन वाला लेते हैं. होम लोन. Yes. ठीक है. अभी इफ यू टेक होम लोन वाला ना, सी होम लोन बिजनेस है. नाउ हाउ डू वी वैल्यू, थोड़ा सा आई टेक टाइम बट आई वी विल डिस्कस एवरीथिंग. होम लोन है. अभी देयर होम लोन डिवीजन, देयर होम लोन में उनके पास पहले तो कितना स्टेक है? इफ यू चेक, दे हैव अ 96.5% स्टेक इन द बिजनेस. दे डोंट हैव 100%. ठीक है. होम लोन में दे डोंट हैव 100%. अभी तक हाउ डू वी वैल्यू द होम लोन कंपनी? एक होम लोन बिजनेस है, कंपनीज इनटू गिविंग लोन्स. हमेशा क्या करने का ना, फाइंड पीयर कंपनीज. हाउसिंग लोन देने वाला कौन कंपनी है? विच आर कंपनीज गिविंग इनटू हाउसिंग लोन्स? एलआईसी हाउसिंग है, करेक्ट. फिर कौन सा है? आधार. आधार है. आवास फाइनेंशियल है. ठीक है. तो दीज आर हाउसिंग लोन कंपनीज. अगर आप देखोगे ना इसमें, नाउ एलआईसी कंपेरेबल नहीं, पीएनबी और एलआईसी कंपेरेबल नहीं, बिकॉज दोज आर वेरी स्लो ग्रोइंग कंपनीज. ठीक है. तो स्लो ग्रोइंग कंपनीज है. तो उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू टेक एकदम कंपेरेबल कंपनीज. अभी इसका होम लोन डिवीजन ना इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस. तो आधार हाउसिंग वगैरह वो हम ले सकते हैं. सो होम लोन वी कैन वैल्यू इट एट, फर्स्ट वे टू वैल्यू इट एज, लेट्स से वी विल वैल्यू मल्टीपल. ओके. पीबी मल्टीपल इज अ गुड वे टू वैल्यू दिस कंपनी. पीबी मल्टीपल, प्राइस टू बुक मल्टीपल यूज कर सकते हैं. बराबर है. करेक्ट. नाउ इफ यू विल सी ऑन एन एवरेज होम लोन कंपनीज, आधार है या वो सब है, हम साथ में ही करते हैं ना. व्हाई शुड आई स्पीक? सो लेट अस सी कि जनरली सिमिलर कंपनीज आर वैल्यूड एट व्हाट पीबी रेशियो. यू कैन डू दिस अलोंग विथ मी इफ यू वांट. और साथ में करते हैं. आधार, सी आधार हाउसिंग फाइनेंस. ओके. आधार हाउसिंग फाइनेंस, इसका पीबी रेशियो कितना? समन इज द पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक 3.21. आधार हाउसिंग फाइनेंस 3.21 प्राइस टू बुक. ओके. आवास, this is also आवास फाइनेंशियल्स, अगेन प्रोवाइडिंग हाउस लोन्स. राइट. चेक करो, हाउस लोन प्रोवाइड कर रहे, होम लोन प्रोवाइड कर रहे. कितना पीबी रेशियो? हाँ, प्राइस टू बुक 2.36. समझा सबको? यस. सो 2.36, 3.0. अगर मैं यहाँ पे कंपेरेबल कंपनीज देख लूं,
तो बजाज हाउसिंग 3.38, ये LIC PNB का कम होगा बिकॉज देयर ग्रोथ इज लेस, द रेट एट विच दे आर ग्रोइंग देयर बिजनेस इज लेस, तो ऑब्वियसली मल्टीपल कम हो जाएगा. ओके, सो यू गॉट एन आइडिया. जनरली 2.5 से 3 टाइम्स का पीबी रेशियो मिलता है. सॉर्टेड ना गाइस, सबको समझना. सो वी जनरली हाउसिंग कंपनीज, होम लोन कंपनीज को 2 से 3 टाइम्स पीबी रेशियो मिलेगा. सो पीबी मल्टीपल, ओके, अराउंड 2.5 टाइम्स टू 3 टाइम्स मिलता है. Okay, this is PB 2.5 to 3. This is the what is happening in the market. बराबर. पर मैं जब भी वैल्यूएशन करता हूँ ना, आई ट्राई बीइंग थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना. सो कंजर्वेटिव रहता है थोड़ा, वील टेक 2 टाइम्स ओनली. ठीक है, 2.5 3 भी नहीं, वील टेक ओनली 2 टाइम्स. तो इसका बुक कितना है होम लोन का? व्हाट इज द बुक वैल्यू? होम लोन का बुक इज 833. द कैपिटल एम्प्लॉयड इज द बुक वैल्यू, राइट? सो वील टेक, okay, 833 into 2 times PB multiple. So we'll get around 1667. This is the value as per us home loan business का. Sorted है everyone? सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मैं निकाल रहा हूँ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, निकाल रहा हूँ. माइनस थोड़ा ही है ना, कितना ही है, 3.5% निकाल देंगे यहाँ से. ठीक है, बट ये गलत है. पता है क्यों गलत है? Anyone can tell me why is this wrong? Because there's a valuation principle that we always keep in mind, which is कि first layer of valuation should always be, if you are getting external transaction value, तो वो यूज करना चाहिए. Now, in June last year, this is July 2026, in June 2025, ये जो होम लोन का उनका डिवीजन है ना, उसमें बजाज बॉट अ स्टेक. सो व्हेन अनदर कंपनी बाइज अ स्टेक, उन्होंने वैल्यूएशन करवाया होगा. सो देयर इज अ वैल्यूएशन ऑलरेडी गिवन टू अस. यू वांट टू चेक? सो इफ यू चेक द कॉन कॉल, एंड हमें किसको वेटेज देना पड़ेगा? जो एक्चुअल वैल्यूएशन. सो इफ यू गो टू जीएम का कॉन कॉल, आई हैव मार्क्ड थिंग्स. If you'll see, this is the latest conference call, okay? So someone had asked over here, you might have marked it. मैंने मार्किंग तो किया ही होगा, एक सेकंड. See, what are they saying? Bajaj Alliance picked up 2.1% shares of JM Financial at 48 rupees, and their valuation is 3100 crores. They invested 65 crores. So, in short, JM Financial का home loan business का valuation is 3100 crores. ठीक है, this is 3100 crores. Is this very clear? Yes? Yes, sir. 3100 करोड़ बराबर है. अभी वी आर एक्चुअल वैल्यू में मिल गया. वी हैव गॉट एन एक्चुअल वैल्यू. ये भी लास्ट ईयर का है गाइस बिजनेस. उसके बाद 15% आई गेस दे हैव ग्रोन देयर बुक. ठीक है, 3100 करोड़. लेट अस बी कंजर्वेटिव. ओके, दिस इज 100%, बट वी वांट 96.5%. यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड you'll get a value. Can someone help me with this? 3100 करोड़ का 96.5%, 2992 crores. 2992 crores, correct? And this is 1667 minus 3.5 percentage. This will give us 1608 crores. Cool? Everyone sorted a home loan. Yes, there are two ways we tried finding the valuation. एक है अपना पीबी मल्टीपल, दूसरा है एक्चुअल वैल्यू. वी शुड एक्चुअली पे मोर अटेंशन टू द एक्चुअल वैल्यू, बट मुझे बहुत कंजर्वेटिव रहना है टू बी ऑनेस्ट. नाउ दिस इज वेरी सब्जेक्टिव. सी, सबका वैल्यू सेम नहीं आता. आई ट्राइंग बीइंग वेरी कंजर्वेटिव. तो दिस इज 1600, दिस इज 2900, ऑलमोस्ट 3000 करोड़. ओके, व्हाट कैन वी डू? वी कैन टेक एन एवरेज. एक एवरेज लेके रख देता है. ओके, सो कैन आई से आई डोंट वांट टू गो टू द हायर वन. सो इसका एवरेज लेंगे तो एग्जैक्ट 2300 करोड़ आता है, तो वो रख लेते हैं. ठीक है, सो लेट अस फाइनलाइज इट एट 23 करोड़, विच इज एन एवरेज ऑफ द टू. ठीक है, तो होम लोन बिजनेस का वैल्यूएशन आया हमें 2300 करोड़. एवरीवन विथ मी इन द क्लास? Yes, sir. परफेक्ट. सेकेंड बिजनेस कौन सा लेना है? वेल्थ मैनेजमेंट लेते. वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस. Now, how do you value wealth management companies, anyone? So, इंडिया में there are 2 or 3 प्योर प्ले वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज. 2 प्योर प्ले. अगर आप चेक करोगे 361
and Nuama. These are two pure play wealth management. पर इसका revenue कैसे आता है ना? They actually on wealth management fees. जेएम फाइनेंशियल नॉट प्योर प्ले वेल्थ मैनेजमेंट. उसका क्या है, ज्यादा ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू है. ठीक है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आनंद राठी टाइप्स थोड़ा. तो वी कैन नॉट से के, सो इफ यू सी 361 नुआमा, दीज गाइज आर एट आई गेस 3 to 4% ऑफ एयूएम. उनका जो भी वेल्थ का एयूएम है वो उतने पे वैल्यू हो रहा है. 361 नुआमा विल बी अराउंड आई गेस 2.5% to 3% of their AUM is ऐसे वैल्यू हो रहा है. कंजर्वेटिव रहता है वेल्थ मैनेजमेंट जेएम का. लेट्स से 2% ऑफ वेल्थ एयूएम लेते हैं. ठीक है, वेल्थ एयूएम का 2% लेते हैं. क्या बोलते हैं, बराबर? कितना है वेल्थ एयूएम? वेल्थ मैनेजमेंट 100% ओन कर रहा है. इसका एयूएम कितना? 1,08,000. 1,08,000, करेक्ट. 1,08,000. उसका 2% कितना आएगा 1 लाख का, गाइस? कैन से 2,000? यस. 1,08,000 का 2% will get 2,160 crore. So what we did is we took percentage of AUM. AUM का एक percentage ले लिया. Okay, this is one way of doing it. Second way of doing it is you can again go to your P multiple. Wealth management P multiple भी ले सकते हो. Generally wealth management companies को 20 to मतलब you can say 30 times मिलता होगा multiple, 25 to 30 times. Let us over your take only, let's say 20 times. 20 times ही लेते हैं. Okay, let us be conservative. तो if we be very conservative, we'll take JM Financial, okay, का let's say P multiple of only 20. Let us consider 20 का multiple. Let's be very conservative. ठीक है, इसका PAT कितना आया? What is the PAT from wealth management? 132 crores. Okay, so 20 into 132 crores कितना आता है? 132, 2,640. Similar to this. So can I say 2,160, इसका भी एवरेज ले लेते हैं. 2,160 प्लस 2,640 डिवाइड बाई 2, एग्जैक्ट 2,400 करोड़ आ गया इसका. 2,400 करोड़ जिसका अपन ले लेते हैं valuation of the wealth management space. Sorted, guys? We are not getting into too much details. सबको समझ रहा है ना? Yes, sir. सही. फिर कौन सा लेना है अभी? नेक्स्ट डिवीजन. सी वी व्हाट वी आर डन विद दिस, वी हैव डिस्कस्ड ये वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, होम लोन हो गया. होम लोन वाज सिंपल बिकॉज डायरेक्टली वैल्यूएशन दे दिया है कॉन कॉल में, बिकॉज द कंपनी रिसेंटली गॉट सम स्टेक गॉट एक्वायर्ड, सो वो सिंपल हो जाता है. वेल्थ मैनेजमेंट हो गया. अभी देखो असेट मैनेजमेंट करते हैं. यस, लेट्स गेट इनटू असेट मैनेजमेंट. असेट मैनेजमेंट, इट इज अ वेरी न्यू बिजनेस. असेट मैनेजमेंट, इसको हमें एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं आएगा इसमें. वी कैन इवन इग्नोर दिस बिजनेस बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल एएमसी. ठीक है, एंड इट इज अ लॉस मेकिंग एएमसी. जनरली अगर आप देखोगे असेट मैनेजमेंट कंपनीज, ओके, जो भी स्मॉल असेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, दे trade at around 3 to 5% of AUM. Some plus minus something, yes. Upon let's take very simple. Let's take just 2% over here. Let's assume 2% for JM. Because we are being very conservative. We are being very conservative. Asset management का what is the AUM right now? Asset management का AUM is 12,000 crores. So 12,000 crore का, they just asset management very small. It's just 12,000 crore का AUM. Let us assume a 2% multiple to this. So कितना हो जाएगा? It'll be 240 crores. 240 crores will be the value. उसमें से भी they are not owning पूरा. They are just owning 59.5% stake. So इसका if you do 59.5%, you will be left with hardly आधा कर लो ना, 240 का 10.5%, 143 crores. That's it. Yes, so इसका valuation we'll keep at
लेट्स अज्यूम इट टू बी 143 करोड़। कुछ नहीं, बिकॉज स्मॉल एएमसी इट्स स्टिल ग्रोइंग, लॉस मेकिंग है। ओके, तो कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा इसका। Sir, when I saw for ICICI and HDFC AMC, they are valued at 10% of AUM. करेक्ट, पर मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखो एएमसी में क्या होता है ना, इट इज लाइक इनिशियली यू विल इनकर लॉसेस, करेक्ट। बट अभी फॉर एग्जांपल एएमसी मतलब क्या गाइस, एनीवन हु इज इशूइंग म्यूचुअल फंड्स, बराबर है। अभी एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप देखो, उसका क्या एयूएम बन गया। सो नाउ आफ्टर अ पॉइंट, अगर सी लेट्स से आई आई लॉन्च अ म्यूचुअल फंड, मेरे म्यूचुअल फंड में ओके पीपल हैव ओनली इन्वेस्टेड 100 करोड़, मेरे एयूएम से 100 करोड़, तो भी उतना ही रिसर्च करना पड़ेगा। इफ इट इज 10,000 करोड़, उतना ही रिसर्च करना पड़ेगा। सो इट इज वेरी हाई फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस, बिकॉज मैंने 10 सीएफए रख लिए, पीपल लाइक अस, द कंपनी हायर्स 10 सीएफएस, दे डिस्ट्रीब्यूट सेक्टर्स के भाई, तू ये 4 सेक्टर, तू ये 4 सेक्टर, दे डू देयर वर्क। नाउ वेदर एयूएम इज 1,000 करोड़, दे हैव टू डू देयर वर्क। 1,000 करोड़ है तो भी क्लाइंट्स आर इंपॉर्टेंट ना, यू हैव टू रेकमेंड द बेस्ट। तो हो क्या जाता है इसमें कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल किक इन नहीं किया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि असेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत नया है, एंड दे हैव क्लियरली इन द कॉन कॉल आल्सो सेड, आई मेक यू गाइस रीड द कॉन कॉल आल्सो, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिर्फ 2 साल तक अभी भी थोड़ा लॉस होगा, एंड देन दे आर सेइंग कि फिर आरओई उनका 15% आ जाएगा, फिर अचानक से आपको बहुत सही प्रॉफिट दिखेगा। सो करेंटली आज के सिचुएशन में हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। एंड इफ यू सॉ वन थिंग, मैं जब वैल्यूएशन कर रहा हूं, आई एम नॉट अज्यूमिंग एनी फ्यूचर ग्रोथ, मैं करंट वैल्यूएशन ला रहा हूं। जनरली व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज। मैं फ्यूचर का ग्रोथ अंदर कंसिडर ही नहीं कर रहा, मैं आज का मल्टीपल दे रहा हूँ, समझा। आज का मल्टीपल हम यूज कर रहे हैं, वी आर बीइंग सुपर कंजर्वेटिव। ओके, असेट मैनेजमेंट हो गया। असेट मैनेजमेंट के बाद क्या करेंगे, नाउ विल गेट इनटू प्राइवेट मार्केट। प्राइवेट मार्केट उनका जो पुराना असेट रिकंस्ट्रक्ट एआरसी बिजनेस है, ठीक है। अभी जनरली क्या होता है यहाँ पे, पीपल वैल्यू इट एट 1 टाइम द बुक। पीपल जनरली इसको वैल्यू करते हैं, ओके जितना भी बुक है, बुक का लेट्स से 1.5 टाइम्स जितना, 1.2 1.5 टाइम्स, दिस इज व्हाट जनरली पीपल डू। जो भी बुक वैल्यू है मल्टीप्लाई इट विथ 1.5, उतना आपका वैल्यूएशन होना चाहिए। लेट अस बी सुपर कंजर्वेटिव, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत बैड लोन्स भी है। वो पुराना दैट दे हैड एआरसी बिजनेस का जो लोन है, दे हैव ट्राइड टू रिड्यूस इट, वेरी बैड लोन्स, तो इसको ना आधा कर देता हूँ। लेट अस मेक द मल्टीपल 0.75, मतलब जितना पैसा उनके पास है उससे भी कम, लेस देन वन बुक। लेट अस बी सुपर कंजर्वेटिव, सो अज्यूम, ओके इन माय ओपिनियन लेट अस अज्यूम 0.7, 1.5 होता है जनरल, लेट अस टेक 0.75 का पीबी मल्टीपल, ओके इनटू उनका बुक वैल्यू प्राइवेट मार्केट में कितना है। प्राइवेट मार्केट में द बुक वैल्यू इज 86578, 6578, 6578, ओके। तो कितना हो जाता है, समवन 578 इंटू 0.75, दिस विल गिव अस 4933 करोड़। 4933 करोड़, ये उनका वैल्यूएशन फाइनल हो जाएगा, ओके। 4933 करोड़, ठीक है। थोड़ा सा 1-2% स्टेक नहीं भी है, समवट इट विल रिमेन द सेम, बिकॉज वी हैव बीन सुपर कंजर्वेटिव। वी नाउ मूव ऑन टू देयर लास्ट एंड द मेन बिजनेस, जो उनका बेस्ट बिजनेस इन माय ओपिनियन, इवन दो इट इज वेरी सिक्लिकल, आई फील दिस इज द बेस्ट बिजनेस, उनका जो आईपीओ वाला बिजनेस है, कैपिटल मार्केट, कैपिटल एडवाइजरी, कॉर्पोरेट एडवाइजरी, सॉरी, कॉर्पोरेट एडवाइजरी वाला जो बिजनेस है उनका, ठीक है। दिस इज द बेस्ट बिजनेस बिकॉज दे आर चैंपियंस एट इन दिस आईपीओ स्पेस। वेरी हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आप देखोगे गाइस, यू वांट टू सी, देखो इंडिविजुअली कॉर्पोरेट एडवाइजरी कैपिटल मार्केट्स में, ओके इफ यू सी their revenue is growing by 26% year on year. Revenue is growing by 26%. Their operating profit before tax is growing by 17% year on year. And if you see the margin is 55%, 53%, 47%, ये उनका मार्जिन है, समझ रहे हो, ये बिजनेस में। तो मेरे लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट ये बिजनेस है। ठीक है, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करो यार, आप 76, 68, 47%, ये उनका रिटर्न ऑन इक्विटी फ्रॉम दिस बिजनेस। आप अगर आप ये चीज देखो ना यार,
if you see their total debt plus equity, the capital employed for this segment is 829 crores. उससे ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे थे, 946 करोड़ का रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं वो इसमें से, ठीक है. दैट टू द लास्ट ईयर वाज नॉट वेरी गुड for the IPO business, right? Last year was not very good. So अभी I have seen reports जहाँ पे they are saying in the next 100 days there are going to be 100 IPOs coming. because बहुत टाइम से IPOs नहीं आए. So IPO अगर आएंगे so these guys are going to benefit. Correct. So अभी generally people give ऐसे business को 20-25 times 20-25 times multiple, ठीक है, P multiple. Let us you're also be conservative. Normalized PAT इसका जो भी होगा, ठीक है. एंड क्या कैपिटल मार्केट हम ले सकते हैं जनरली, एक्चुअली 30 टाइम्स मल्टीपल भी मिलता है इसमें. लेट अस टेक 20 टाइम्स मल्टीपल. आई एम नॉट श्योर. यस, क्या लेना है, 20 टाइम्स लेना है, क्या ले सकते हैं अपन. 20 टाइम्स पी मल्टीपल लेते हैं. पी ऑफ 20, लेट्स assume this, multiply, you can multiply the PAT, normalized PAT, which is, let's say, कितना है PAT इसका. Let us assume PAT बढ़ेगा नहीं, ये लास्ट ईयर जितना ही रहेगा, 350 करोड़ ही रखते हैं इसको. So you will get somewhere around 350 into 20, 7,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिल रहा है इसमें. 7,000 करोड़ का वैल्यूएशन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है guys. We are done with all the five. If the people, हाँ जैनब भाई, tell me. So when I was seeing DAM Capital, it is a pure investment banking company, Correct, and correct. it has been valued at 15 का P historically. तो So you इसको can कम take कर देना. 15. हाँ, सी डैम कैपिटल में क्या इश्यू देता है, मेन इश्यू तो छोटे छोटा आईपीओ करता है. डैम कैपिटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज फेमस फॉर एसएमई आईपीओस. नाउ दीज गाइज Yes. अर्न अ परसेंटेज ऑन द आईपीओ दैट दे आर गोइंग टू कम, राइट, इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह. तो अगर वो छोटा आईपीओ लाएगा तो उसका फीस भी कम होगा. आज जेएम फाइनेंशियल इज इन लीग्स ऑफ एक्सिस. एक्सिस कैपिटल जो आईपीओस लेके आ रहा है. देन इफ यू सी, सो वो टॉप जो दो तीन है ना, उसमें जेएम फाइनेंशियल आता है. यू कांट कंपेयर इट विद डैम, ठीक है. बट ठीक है, चलो, इफ वी वांट, लेट अस टेक अ स्मॉलर मल्टीपल ओवर हियर. लेट अस टेक, आपने जो बोला वो अज्यूम कर लेते 15 टाइम्स. जो डैम को मिल रहा है उतना ही अपन अज्यूम कर लेते, ठीक है. तो कितना हो जाएगा, 350 करोड़ इंटू 15 टाइम्स, 5250. 5250 करोड़, ठीक है. चलो, तो वी आर डन विथ अवर ऑल फाइव बिजनेसेस का सम ऑफ द पार्ट्स. लेट अस नाउ ट्राई टोटलिंग दिस. Okay, we started with, I guess, home loan, then we went into wealth management, then we went into asset management, then private markets, yes, and then we went into this corporate advisory. Okay, now let us put the sum of all. फटाफट. होम लोन का फाइनल 2300, 2324. वेल्थ मैनेजमेंट, एक्सेलेंट, 2324. असेट मैनेजमेंट 143, और नेग्लिजिबल ही है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा. प्राइवेट मार्केट 4933 एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी 5250. ठीक है, वी आर नॉट येट डन विद दिस गाइस. दीज आर द टोटल ऑफ फाइव बिजनेसेस, बट वी आर फॉरगेटिंग समथिंग. मैं आपको अगर स्क्रीनर पे लेके जाऊं, ठीक है, जेएम फाइनेंशियल, समथिंग वी आर फॉरगेटिंग. द कंपनी हैज अ कैश इक्विवेलेंट ऑफ हाउ मच, 44,868 करोड़ का कैश पड़ा है उनके पास. So if you understand, okay, today market is valuing not it at 12,500. 12,500 में आप कंपनी खरीदोगे, you will get इतना कैश. Correct. Now, if you get into the detail, we don't have the latest annual report. इसमें से ना थोड़ा कैश ऐसा होगा, the guys, some part of cash will be compulsory, कि अगर because you're into capital market ना, regulator requires कि थोड़ा पैसा आपको हमारे पास रखना पड़ता. So some part of this would be, let's say, regulatory. बाकी का तो फ्री कैश है, तो फ्री कैश भी हमें ऐड करना है. तो आई डोंट नो हाउ मच इज फ्री कैश. सो हम अज्यूम करते हैं आधा फ्री कैश है, आधा रेगुलेटर वाला है. सो लेट अस ऐड द कैश बैलेंस. 4800 का आधा ले लेते हैं.
50% ऑफ कैश, ठीक है, बैलेंस। 50% ऑफ कैश बैलेंस कितना, 48 का 2400 करोड़ ले लेते हो। नाउ यू कैन टोटल दिस एंड टेल मी कितना आ रहा है। कैन समवन प्लीज हेल्प मी? Sir, 17,426. श्योर? माय गॉड, 17,426 crores is the valuation as per our discussion. And trust me, we have tried being जितना conservative हो सके. And आज का market cap is 12,500 crores. ठीक है? So do you agree? Yes. I feel in my opinion the business is undervalued. Okay, market उसके बाद 12,500 करोड़ पे वैल्यू कर रहा है, but according to our calculations, okay, the valuation should be 17,426. Now obviously when a company has multiple businesses, थोड़ा होल्डिंग कंपनी क्या बोलते हो, सम ऑफ द पार्ट्स में डिस्काउंट पे ट्रेड करता है, बट इतना डिस्काउंट, so that is something we'll have to understand. And every segment over here is growing. So now I'll tell you, I have started buying position in this. I have not completed my target position. I'll tell you what facts I feel are good and what facts. Okay, let us make a list of this. Always this is something I've started doing lately. कुछ कोई भी स्टॉक मैं खरीदता हूँ ना, I write out what do I find is attractive and what are the risks. ठीक है, what are the attractive points. Okay, what points excite me and what are the risks. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट। ओके, द आईपीओ अप साइकिल। जो आईपीओ को अप साइकिल चाल सी इन द अभी इफ आई टेल यू ना, इंडिया का फर्स्ट क्वार्टर इज अप्रैल, मई एंड जून, वी आर इनटू द जून। मैंने थोड़े मेरे कॉन्टैक्ट्स यूज करके आई हैव अंडरस्टूड दैट इन द लास्ट 3 months देयर हैव बीन नो गुड आईपीओस। एक दो महीने से ये लोग ऐसे ही बैठे हैं, कोई आईपीओ आ नहीं रहा, एंड यू कैन सी ऑल्सो दैट आईपीओ आर नॉट कमिंग। बट जैसे ही मार्केट सी नो, if I am a businessman, I would not want my company to do IPO in a bear market. In the last few months, in the last 6 7 months, market has not done well. So companies have not come up with IPO. तो सब इकट्ठा होके बैठा है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा ना, यू विल सी एवरी डे दो तीन आईपीओ आ रहे हैं, एक हफ्ते में 10 आईपीओ, वैसा सीन हो जाएगा। एंड दीज कम एंड जेएम फाइनेंस इन द कॉन्क्लेव हैव सेड कि बहुत बड़ा ऑर्डर बुक उनका बिल्ड हो गया। जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, ओके, एंड मार्केट्स आर गोइंग टू अप, जैसे सो अ लॉट ऑफ आईपीओस विल कम एंड डायरेक्ट बेनिफिट इज टू जेएम फाइनेंस। तो आईपीओ का अप साइकिल आएगा 1.5 year, उसमें the price can go up a lot. That is one attractive point. IPO का up cycle, we are at the down cycle of IPO, ठीक है, और उनका मेन बिजनेस आईपीओ है जहां से मैक्सिमम दे आर अर्निंग, ठीक है। सेकेंड इज करंट वैल्यूएशंस आर रीजनेबल। वैल्यूएशन राइट नाउ जो हमने अभी कर दिया इज रीजनेबल, मेरे को काफी रीजनेबल वैल्यूएशन लग रहा है अभी, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। थर्ड, ग्रोथ। सी you can get many companies at very low PB, will get very low PE because there is no growth, but that is not the case over here. इसका ग्रोथ बहुत सही है। अगर आप देखोगे, you know, their plans are very good. Asset management में लॉस है, बाकी सब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में दे हायर सो मेनी आरएम्स। तो अगर आप देखोगे इनका पीपीटी में, ओके, उनका जो आ गया wealth management, if you see, they're hiring a lot of people right now. See, sales and wealth relationship managers headcount has increased 30%, RMs up 61%, sales employees up 24%, ठीक है। सो और उनका मेन चीज क्या है, मेजर रिक्रूटमेंट फेज इज ओवर, फोकस ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। जो जितने लोग हायर कर रहे थे ना, कर लिए, अभी कॉस्ट नहीं और इंक्रीमेंटल बढ़ेगा, बट दे विल ट्राई इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग दैट हैज मेड मी हैप्पी कि चलो वेल्थ मैनेजमेंट अगेन वेरी गुड बिजनेस, ओके, इसमें एक बार लोगों को हायर कर दिया, नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि वहां से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके यू इंक्रीज रेवेन्यू। सो ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि यार चलो, this is a very healthy signal। एक सेकंड, अभी मैं आपको wherever we, so these are the attractive points। अभी मैं आपको रिस्क बताता हूँ। देखो, ये जो बिजनेस है ना, लोन देना है, आईपीओ है,
This is all capital allocation heavy businesses. Where do they allocate money? Okay, they have clearly said हमें आईपीओ वाले बिजनेस में दे ओन मनी बट दे डोंट नीड कैपिटल. सो वहां से जो एक्सेस कैपिटल आएगा हर साल दे ओन लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द आईपीओ बिजनेस, उसका क्या करेंगे? दैट इज अ बिग थिंग. मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन कैसे करेगा उस पर सब डिपेंडेंट है, और ये बड़ा रिस्क है. बिकॉज इन द पास्ट दे हैव डन अ वेरी बैड जॉब. देयर ट्रैक रिकॉर्ड इज बैड, विच इज व्हाई द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ लो पीबी रेशियो टुडे. अगर आप देखोगे पास्ट में द कंपनी हैज टेकन वेरी बैड डिसीजंस. तो दूसरा जो मेरा वही उससे लिंक्ड रिस्क है इज एग्जीक्यूशन. कंपनी एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं? बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, ठीक है, कौन कौन में दे सेइंग दिस दैट, बट विल दे बी एबल टू एग्जीक्यूट इज अ प्रॉब्लम. एंड एग्जीक्यूशन अगर कर दे, बिकॉज द पास्ट हैज नॉट बीन वेरी गुड. ओके, इन द पास्ट दे हैव मेड मेनी मिस्टेक्स. सो इन द फ्यूचर विल दे बी एबल टू डू वेल? So on paper things seem very good, but whether management will be able to execute what they're saying, if yes, then there's it's a no-brainer. Also, मेरे को ना एक चीज बहुत सही लगा. Recently they have started giving a lot of dividend also. सर क्यों डिविडेंड अच्छा होता? मतलब दे आर वैल्यूइंग कैश. अगर अंदर अंदर पैसा घूम रहा है ना, शेयर होल्डर को नहीं मिला तो प्रॉब्लम है. दे व्हाट दे हैव सेड इज uh, 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 what they have said is, see, if we'll go to the con call, I'll show you in the con call what they're saying is, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि हर साल हम जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करेंगे 50% विल डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड. दे हैव सेड वील ट्राई डूइंग दिस. सी, ऑल्सो गाइस, ये जो होम लोन वाला बिजनेस है ना, होम लोन बिजनेस, दे आर सेइंग कि वील ट्राई डूइंग आईपीओ 2028-29 तक. आईपीओ लेके आएंगे सिर्फ होम लोन बिजनेस. तो क्रेजी वैल्यू अनलॉक होगा if they are able to do it long ahead. 2-3 साल की बात है, but if they are able to do it, crazy. Yes, and see, we have committed to declaring 50% of PAT as dividend every year for our shareholders, and they've actually done that. Last year, guys, last 12-14 months है what they have said, 590 crores का dividend they've actually distributed. तो भाई इमेजिन करो यार, मतलब यू अंडरस्टैंडिंग, आपको कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड भी मिलेगा. इफ कहाँ पे लिखा है मैंने मार्क? सी, इन द होम लोन बिजनेस ऑल्सो ना, द ग्रॉस एनपीए जस्ट 0.5%. कलेक्शन एफिशिएंसी भी उनका अच्छा है. दे ग्रोइंग देयर होम लोन बिजनेस इज सरप्राइजिंगली डूइंग वेरी वेल. सी, 5.95 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, 570 करोड़ का डिविडेंड जब एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड. If you buy a share at 100 rupees and you get 5.95, the rough price was 100 in the last 1 year, I feel. 100 रुपए में 5.95 का डिविडेंड, यू आर गेटिंग अ 5.95% का डिविडेंड yield plus the capital appreciation. So I feel at the current levels, not a problem, not a problem at all. Yeah. So that is everything that I wanted to discuss. It took a lot of time. Sorry. Anything anyone wants to discuss, we can surely discuss it. I'll go through the chat box section. Parth by saying too many business too early as a risk. Parth, they are there in the business in 1973. So I feel it's more than 50 years. Correct. So I don't think it's a new company, but why execution risk है? Oh, I can't tell. ध्यान भाई, वो डिविडेंड इसलिए दे रहे हैं बिकॉज पास्ट में दे यूज्ड टू नॉट गिव डिविडेंड. ठीक है, एंड वो जो पैसा है दे यूज्ड टू देन पुट इट इनटू बैड बिजनेसेस. तो इट इज बेटर इफ दे गिव सम डिविडेंड, आई फील. ओके, डिविडेंड इज एक्चुअली प्रूफ दैट दे आर अर्निंग कैश, वरना सिर्फ पेपर पे ना. सो आई फील सम कंपनी शुड एक्चुअली गिव डिविडेंड. जेएम फाइनेंशियल डिविडेंड दे रहा तब लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं एक्चुअल में कैश बना रहा है, वरना सिर्फ बुक प्रॉफिट होगा, कैश बन ही नहीं रहा. सो आई फील इट इज गुड दैट दे आर गिविंग डिविडेंड. एंड Right, एज makes सच, sense, sir. एंड उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं ना. दे आर क्लियरली सेइंग, अगर आप सी इन द कॉन्फ्रेंस आल्सो दे हैव सेड कि मेजॉरिटी बिजनेस में उनको पैसे का जरूरत ही नहीं. दे आर नॉट इनटू लाइक कि वो कुछ बड़ा खर्चा करना पड़ेगा. अभी आईपीओ में क्या, दे हैव हायर्ड एम्प्लॉइज, उनको सिर्फ रेस देते रहेंगे, सैलरी इंक्रीमेंट, but they don't need huge capital every year. क्योंकि अगर कैपिटल उन्होंने रिटेन कर दिया एंड दे आर नॉट एबल टू, तो फिर इसलिए उनका आरओई फिर डिप्रेस्ड रहता. सी, दे हैव क्लियरली सेड
For the capital advisory, corporate advisory capital market, private market, we do not need any new capital. Vishal Company is the promoter, he has himself said. समझा? So जो थोड़ा dividend देंगे, थोड़ा ये it will be to grow the wealth management, asset management and home loan. That's it. Okay, sir, makes sense. Perfect. Great. Perfect. I feel there are no queries as such. Guys, कैसा लगा? Should we do such discussions more? Yes, sir. I've tried More doing valuation practical. first time. Yeah, sure. फर्स्ट टाइम ऐसा हमने लाइव कुछ किया तो मजा आया पर आई फाउंड इट मोर फन तो दिस इज ग्रेट 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 अमेजिंग थैंक यू यार फॉर अटेंडिंग संडे सुबह सुबह आई होप यू गाइस हैड फन yes we'll keep doing such things